Bismillahir Rahmanir Rahim. Hello friends, I hope you are all well. Today we are going to read Unit 8 Tolerance from the book English Language for Grade 8 Balochistan Textbook Board Quetta. So let's start. Once upon a time there lived a farmer who had a small piece of land. एक ज़माने में एक किसान रहता था जिसके पास ज़मीन का एक छोटा टुकड़ा था. His name was Kareem. उसका नाम करीम था. He was a kind and good-natured person. वो एक नरम मिजाज और नेक मिजाज इंसान था. He lived in a hut with his wife and children and earned a livelihood by selling crops. वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ झोंपड़ी में रहता था और फसलें बेचकर माश हासिल करता था. करीम loved to help others. करीम दूसरों की मदद करना पसंद करता था. Whenever someone fell ill or needed something, Kareem was there to help that person. जब भी कोई बीमार होता था या किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी, करीम उस शख्स की मदद के लिए मौजूद होता था. If someone died in the village, Kareem assisted the family members of the deceased person in whichever way he could. अगर गांव में कोई फौत होता तो करीम ने मरने वाले के लवाहिकीन का जैसा भी मुमकिन होता मदद करता. There seemed to be none who hated him. ऐसा लगता था कि उससे नफरत करने वाला कोई नहीं है. He appeared to be loved by one and all. यूँ लगता था कि उससे सब मोहब्बत करते थे. But there was one person, Jamal, one of his neighbors, hated Kareem. लेकिन एक शख्स जमाल था, उसका एक हमसाया करीम से नफरत करता था. He was a lazy person by nature. वो फितरत के लिहाज से एक काहिल इंसान था. So he could not grow as much as crops as Kareem did. लिहाजा वो इतनी फसल नहीं उगा सकता था जितना करीम ने किया था. Hence, every year when he saw Kareem earning more profit than him, he became more jealous. लिहाजा हर साल जब वो करीम को उससे ज़्यादा मुनाफा कमाते हुए देखता था तो वो ज़्यादा हसद करता. One year, what happened that Jamal, in his utmost hatred, set fire to the crops of Kareem. एक साल क्या हुआ कि जमाल ने अपनी शदीद नफरत से करीम की फसलों को आग लगा दी. But luckily one of the neighbors came to help and much of the crops were saved from being destroyed. लेकिन खुशकिस्मती से पड़ोसियों में से एक मदद करने आया और बहुत सारी फसलें तबाह होने से बच गई. करीम thought who could do it? करीम ने सोचा ये कौन कर सकता है. He tried to find out which direction the fire had started from. उसने ये जानने की कोशिश की कि आग किस सिमत से शुरू हुई है. He suspected that Jamal could have done it, but he was not sure. उसे शुबा था कि जमाल ये काम कर सकता है, लेकिन उसे यकीन नहीं था. Therefore, he decided not to take any action unless he could see himself as the culprit doing it again. लिहाजा उसने उस वक्त तक कोई कार्रवाई ना करने का फैसला किया जब तक कि वो अपने खुद मुजरिम को दोबारा ऐसा काम करते हुए ना देख सके. Few days later, Kareem was awakened by a loud voice of neighbors. कुछ दिन बाद पड़ोसियों की तेज आवाज से करीम जाग उठा. He went out and saw a crowd in front of Jamal's hut. वो बाहर गया और जमाल की झोंपड़ी के सामने एक हजूम देखा. He was told that Jamal's son was bitten by a poisonous snake. उसे बताया गया कि जमाल के बेटे को जहरीले सांप ने काटा है. The village doctor did not have an injection for a snake bite. गांव के डॉक्टर के पास सांप के काटने के लिए इंजेक्शन नहीं था. करीम knew what he had to do. करीम जानता था कि उसे क्या करना है. He took Jamal and his son in his tractor trolley to the town hospital that was 5 miles away, where doctors saved his life. वो जमाल और उसके बेटे को अपने ट्रैक्टर ट्राली में लेकर टाउन अस्पताल पहुंच गया जो 5 मील दूर था जहां डॉक्टरों ने उनकी जान बचाई. A day later, Jamal went to Kareem's hut and began weeping bitterly.
ایک دن بعد جمال کریم کی جھونپڑی میں گیا اور بری طرح رونے لگا. He confessed that it was he who set his crops on fire, but he was surprised when Kareem told him that he knew about it all. اس نے اعتراف کیا کہ وہ وہی شخص تھا جس نے فصلوں کو نظر آتش کیا تھا، لیکن جب کریم نے اسے بتایا کہ وہ اس سب کے بارے میں جانتا ہے تو اسے حیرت ہوئی. You knew I had set fire to your crops and still helped me save my son's life? asked the astonished Jamal. تم جانتے ہو کہ میں نے تمہاری فصلوں کو آگ لگائی ہے اور پھر بھی میرے بیٹے کی جان بچانے میں میری مدد کی؟ حیرت زدہ جمال نے پوچھا. کریم nodded and said, I did what I knew was right. کریم نے سر ہلایا اور کہا، میں نے وہ کیا جو میں جانتا تھا کہ صحیح تھا. Could I do the wrong just because you had done so? جمال stood up and embraced کریم. کیا میں غلط کام صرف اس وجہ سے کر سکتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیا؟ جمال کھڑا ہوا اور کریم کو گلے لگا لیا. Both men were in tears and so were the others who stood by them. دونوں آدمیوں کے آنسو نکل رہے تھے اور دوسرے بھی جو ان کے ساتھ کھڑے تھے. From that day, Jamal changed himself. اس دن سے جمال نے خود کو بدل لیا. Within a year, he was able to produce more crops through his hard work. ایک سال کے اندر وہ اپنی محنت کے ذریعے زیادہ سے زیادہ فصلیں تیار کرنے میں کامیاب رہا. When the others asked him how he had changed so much, he only replied, It was the goodness and love of Kareem that brought a change in my life. جب دوسروں نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنا کیسے بدل گیا ہے تو اس نے صرف جواب دیا، یہ کریم کی نیکی اور محبت تھی جس نے میری زندگی میں ایک تبدیلی لائی. So that's it for today's lesson. Subscribe our channel Computer Education Pakistan. Like this video if you enjoyed. Press the bell icon so you can get our latest notification. And also like our Facebook page Computer Education Pakistan. Allah Hafiz.